Oscar Award, the Oscar Award 2025. Conan O'Brien with your own Oscars printable ballot. कैनोन ओ क्या लिखा है ये? कोनान ओब्रायन कोनान ओब्रायन with your own Oscars printable ballot with your own बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है। एनोरा को बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मिला है एड्रियन ब्रोडी को। एक्टर इन लीडिंग रोल एड्रायन ब्रोडी। एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल माइकी मेडिसन। एनोरा सपोर्टिंग एक्टर सपोर्टिंग रोल। ये देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है पर कोई बात नहीं, सोन इट विल बी क्लियर एज वेल। एक्टर इन द सपोर्टिंग एक्टर या सपोर्टिंग सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड इन ऑस्कर। सो अपने ये हो गए माइकी मेडिसन। फिर ये कियारान कुल्किन एक्टर रियल पेन। इंटरेस्टिंग फैक्ट विद रिकॉर्ड ब्रेकिंग 13 nominations. Emilia Paris set a new milestone for non-English language films with a record breaking 13 nominations. Emilia Paris sets a new milestone for non-English 13 nominations. Emilia Paris sets a new milestone for non-English language films. However, its awards season journey has been largely overshadowed by off-screen controversies. However, its award season journey has been largely overshadowed by off-screen controversies. अच्छा एमिलिया पेरेस को 30 नॉमिनेशंस मिले हैं। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन 1983 में भानु अथैया को मिला था। जिस साल वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने, उस साल भानु अथैया को मिला था। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन 19 बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन 19 बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड इन ऑस्कर्स। Sean Penn won the 2026 Oscar for Sean Penn को मिला है। Sean Penn को Sean Penn जोए सल्दाना। ऊपर की लाइट खोल दी भाई। बेस्ट ऑस्कर्स अवार्ड recent Oscar award winners कौन कौन है?
90th Academy Awards held in March. 90th Award held in March 2026. One medal after another. नमस्ते वहाँ ज़्यादा मुझे बता ना। Sorry for the inconvenience. The network issue was there, so it was sudden pause in the live. 90th Academy Awards held in March 2026. अच्छा 90th ऑस्कर हो चुके हैं मार्च 2026 में. ओके ये वाले कौन से 97th होंगे शायद. 98th ऑस्कर जो है वो 98th ऑस्कर जो है वो हो चुके हैं. अच्छा ठीक है आगे चलते हैं. आगे अपने आते हैं मिचेल बी जॉर्डन. Michael B. Jordan won Best Actor for Sinners, while Michael Madison won Best Actress for Anora. Michael Madison won for Anora. One after another, one after another. एक चीज़ समझेंगे ध्यान से यहाँ पे बारीकी से कि जैसे हमने अभी अवार्ड्स पढ़े हैं तो उसमें जो बैलेंडे अवार्ड है वो तो फुटबॉल के हो गए. ठीक है अपने ने अवार्ड पढ़े थे कौन से 71st नेशनल पढ़े. उससे पहले फिल्म फेयर अवार्ड पढ़े. उससे पहले एक अवार्ड पढ़े थे हमने वन बैटल आफ्टर अनदर. हमने कौन सा पढ़ा है अवार्ड तो पढ़ा है हमने वन बैटल आफ्टर अनदर. वो हमने पढ़ा शायद इसमें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026. अच्छा गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 वन बैटल आफ्टर अनदर. गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026. नाइन्टी एट्थ
Academy Award Oscar were held on 15th March 2026. Best Supporting Actor Sean Penn one battle after another.
भाई आवाज़ कम कर ले दो थोड़ी सी। देखो पुलित्ज़र हमने कर लिया, पुलित्ज़र अवार्ड्स वगैरह हमने पढ़ लिए। इसके बाद आते हैं हम द ब्रूटलिस्ट। ब्रूटलिस्ट अवार्ड वाले भी कर लिए हमने, ठीक है। भानु अथैया को मिला 1983 में, भानु अथैया को मिला, ठीक है। ऑस्कर ऑस्कर अवार्ड बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए 1983 में, जिस ईयर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, ठीक है। फिर 1992 में मिला ऑनररी अवार्ड बेस्ट बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए सत्यजीत रे, साउंड सत्यजीत ऐसा करके। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए भानु अथैया को मिला। फिर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग 2009 में मिला, ठीक है। बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए मिला, एक सेकेंड, ऑनररी अवार्ड 1992 में मिला ये। और बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए मिला रेसुल रेसुल पोकुत्ती को। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिला गुलजार को 2009 में। ओरिजिनल स्कोर ए आर रहमान को मिला 2009 में। रेसुल पोकुट्टी याद नहीं रह पाएगा, रेसुल पोकुट्टी, रेसुल पोकुट्टी। आगे चलते हैं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट 2023, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट 2023। ये अपनी कार्तिकी गोंसाल सेल्वेस, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स के लिए मिला है कार्तिकी। फिर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एम कीरावनी एंड चंद्र बोस, एम कीरावनी एंड चंद्र बोस। एम कीरावानी एंड चंद्र बोस, एम कीरावानी एंड चंद्र बोस हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं ओरिजिनल सॉन्ग के लिए 2023 में मिला था कीरावानी एंड चंद्र बोस को। इंटरेस्टिंग फैक्ट विद रिकॉर्ड ब्रेकिंग 30 नॉमिनेशन। इमिलिया पेरेस को इस साल तो नहीं मिला नॉमिनेशन में, लेकिन अगले साल के लिए इमिलिया पेरेस को मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। आगे चलते हैं बीसीसीआई अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला कर्नल सीके नायडू।
क्लार्क मार्टिनेस देवो क्लार्क मार्टिनेस। तो 2025 का, अगर हमें 2025 के नोबेल प्राइज़ अवार्ड याद करने हैं फिज़िक्स के, तो हम कैसे याद करेंगे कि जॉन क्लार्क को मिला है, माइकल एच डोवेरेट को मिला है और जॉन एम मार्टिनेस को मिला है। तो यहाँ कैसे देखेंगे कि जॉन क्लार्क को मिला है, अंकल क्लार्क प्लेयर है ना ऑस्ट्रेलिया का, था मतलब अब रिटायर हो गए। सो क्लार्क मार रहे हैं, देवा रहे हैं, ऐसा करके। फिर अपना चलते केमिस्ट्री पे, और केमिस्ट्री की ट्रिक है सोसो रिचर्ड को सोसो लगी ओमा, ऐसा करके ओमार ओमार एम यागी रिचर्ड सुषमा कितागावा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। ठीक है, सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। For Aristotle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to डेमोक्रेसी की आगे चलते हैं। मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल 2025। जोएल मोकिर को मिला है फॉर हैविंग आइडेंटिफाइड द प्रीरिक्विजिट फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ठीक है, फिलिप्स को मिला है। ठीक है, पीटर को मिला है, पीटर थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। फिलिप्स को जोई मोकिर को मिला है फॉर हैविंग आइडेंटिफाइड द प्रीरिक्विजिट्स फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ। फिलिप्स पीटर ने डिस्ट्रक्शन करी, जोई मोकिर ने मेडिसिन में मिला है ब्रोंको रैमस्टेल साइमन साकागुची फॉर द डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। गैलियम 80 डोर्जी वांगमो। गैलियम 80 डोर्जी वांगमो वांगचुक, द क्वीन मदर ऑफ भूटान, was honored with the 22nd उपेंद्रनाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड। गैलियम 80 डोर्जी वांगमो वांगचुक, 80 डोर्जी वांगमो वांगचुक, the queen mother of Bhutan, was honored with the 22nd उपेंद्रनाथ ब्रह्मा 22nd उपेंद्रनाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025।
with the 22nd Upendranath Brahma. With the 22nd Upendranath Brahma. With the 22nd Upendranath Brahma Soldier of Humanity Award. With the 22nd Upendranath Brahma. Upendranath Brahma Soldier of Humanity Award. With the 22nd Upendranath Brahma Soldier of Humanity. with the 22nd उपेंद्रनाथ ब्रह्मा अवार्ड मिला है, ठीक है। प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी वॉन फर्स्ट प्राइज एट स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 बाय MOBSW for excellence in cleanliness, sustainability and community participation. Prize at Swachhta Pakhwada Awards 2025. Paradeep Port Authority won first prize. Paradeep Port Authority won first prize. Paradeep Port Authority won first prize at स्वच्छता पारादीप पोर्ट ने मिला, ठीक है, स्वच्छता पखवाड़ा में। आगे चलते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड विंस FIPPI अवार्ड 2025 एंड एज ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर। ऑयल इंडिया लिमिटेड विंस, ऑयल इंडिया को मिला FIPPI अवार्ड एज ऑयल एंड ड्यूरिंग द इंडिया एनर्जी वीक, recognizing its strong performance and contribution to India's energy security. Its strong performance and contribution to India's energy security, ठीक है। पुदुचेरी डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद and Dr. R. Venkatesh win Chang Crandall Humanitarian Award 2026 for cataract care. पुदुचेरी के डॉक्टर है, नाम क्या है उनका? डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद एंड डॉक्टर आर वेंकटेश, ठीक है। सो एक तो आर वेंकटेश है, विन चांग क्रेंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ओके। चांग क्रेंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला? पुदुचेरी के डॉक्टर है हरिप्रिया अरविंद एंड डॉक्टर वेंकटेश। 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 कैटरेक्ट करके मिला चांग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। हरिप्रिया एंड वेंकटेश by Ascars Foundation. Trump meets Machado where it presented him the Nobel Peace Prize. The Ministry of Statistics has invited nominations for the Sukhatme National Award in Statistics. The Center for Development of Telematics CDOT has received the ISCOS Award. Center for Development of Telematics Center for Development of Telematics has received the ISCOS Award 2025 for its indigenous cell broadcast solution. CDOT को मिला है फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडियन रेलवेज हैज़ कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट अवार्ड ऑन RPF ऑफिसर चंदना सिन्हा फॉर हर एक्सेप्शनल वर्क इन प्रिवेंटिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग। प्रिवेंट के लिए चंदना ने। आगे चलते हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग आगे चलते हैं। हाईएस्ट अवार्ड ऑन RPF ऑफिसर चंदना सिन्हा।
हाईएस्ट अवार्ड ऑन आरपीएफ ऑफिसर चंदना सिन्हा। चंदना सिन्हा ठीक है। स्कॉच अवार्ड से .com मिल गया ठीक है। ग्रेका मिचेल द renowned Mozambican human rights activist has been awarded the Indira Gandhi Peace Prize for 2025. Greca McGill, the renowned Mozambican human rights activist. Greca McGill, the renowned Mozambican human rights activist. The renowned Mozambican human rights activist. Indira Gandhi Peace Prize for 2025 to Greca McGill, the renowned Mozambican है ये, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है ठीक है। मोजाम्बिक देश जो है वहाँ की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। इंडियन आर्मी मेजर Swati Santha Kumar has won the UN Secretary General's Award. A UN Secretary General's Award 2025 for Gender Inclusive Peacekeeping in South Sudan. For Gender Inclusive Peacekeeping in Swati Santha Kumar has won the UN Secretary General's Award 2025 for Gender Inclusive Peacekeeping in South Sudan ठीक है। सेक्रेटरी जनरल अवार्ड साउथ सुडान में। आगे चलते हैं। शांता कुमार हो गया ठीक है। आगे चलते हैं। स्वाति हो गई ठीक है। आगे चलते हैं। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट टोबी केयर्स हैज वॉन द टेलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है, क्या नाम है? टोबी केयर्स। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट टोबी केयर्स हैज वॉन द टेलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट का क्या नाम है? टोबी केयर्स। ट्रम्प का नाम टी से बनता है, अमेरिका वाली का जो नाम है वो टी से बन रहा है। टोबी केयर्स हैज वॉन द टेलर प्राइज, टी वाली प्राइज है टेलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट। आगे चलते हैं। Ravina Tandon is honored as PETA India's Person of the Year 2025 for her dedication India's rising talent. Ravina Tandon is Person of the Year 2025 for 2025 for her dedication to animal rights, wildlife protection, vegan advocacy and human education. Ultra reception of FIFA Peace Prize at World 2021.
plantation study of the law, and welcome. Just a second. There will be slight disruption. Okay, so we were doing current affair, and we were at Anant Ambani receives Global Humane Society's Animal Welfare Award for founding Vantara. ठीक है. नीरज गेवान्स फिल्म Homebound. Okay, please study. Stop reacting. Neeraj Gewan's film Homebound has been shortlisted among the final 15 films. नीरज गेवान की फिल्म है Homebound. ठीक है. Homebound has been shortlisted among the final 15 films for Best International Feature Films. ठीक है. At the 98th Academy Awards 2026. ठीक है. नीरज गेवान्स की लास्ट 15 में गई है Homebound. आगे चलते हैं. Awards and honors. Alia Bhatt was honored with the Golden Globes Horizon Award at the Red Sea International Film Festival in Jeddah. Golden Globes Horizon Award at the Red Sea International Film Festival in Jeddah, celebrating her growing impact in global cinema. Golden Globe Horizon Award, the Red Sea International Film Festival. The Red Sea International Film Festival, Red Sea. Okay, National Award winning actor Kirti Suresh is now UNICEF India's celebrity advocate. UNICEF India's celebrity advocate, focusing on child rights and mental health awareness across India. India's celebrity advocate, focusing on child rights and mental health awareness across India. And mental health awareness across India. आगे चलते हैं. सुप्रिया साहू wins mental health awareness across India. ठीक है. कीर्ति सुरेश को बनाया है एडवोकेट. सुरेश ठीक है. कीर्ति सुरेश ठीक है. सुप्रिया साहू wins
United Nations Environment Programme 2025 Champion of the Earth Award. Supriya Sahu for her pioneering climate actions in Tamil Nadu, including sustainable cooling ecosystem restoration, and heat resilience initiatives. Sustainable cooling ecosystem restoration, cooling sustainable cooling ecosystem restoration and heat resilience initiatives. ठीक है. Leonardo DiCaprio will be honored with the Desert Palm Achievement Award. Leonardo DiCaprio will be honored with the Desert Palm Achievement Award for his role in One Battle After Another at Palm Springs Film Festival. अच्छा, वन बैटल आफ्टर अनदर में जो ये है अपने लियोनार्डो डी कापिलो माइकल बी जॉर्डन को मिला है अवार्ड ये बेस्ट एक्टर का. वन बैटल आफ्टर अनदर के जो एक्टर है उन्हें नहीं मिला. ठीक है. बेस्ट पिक्चर का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला. विनर कौन कौन है इसके? पॉल थॉमस एंडरसन, एडम शोमर एंड शारा मुर्फी. सिनर्स को भी मिला. सिनर्स की हैमलेट की एक्ट्रेस है हैमलेट. शेन पेन को मिला है. ठीक है, आगे चलते हैं. National Award winning Kirtan is now UN celebrity focusing on child right and mental health awareness across India. Leonardo DiCaprio will be honored with the Desert Palm Achievement. Leonardo DiCaprio will be honored. Leonardo DiCaprio. ठीक है. Palm Springs Film Festival. Palm Springs Film Festival. आगे चलते हैं. The 55th World Economic Forum in Davos. David Beckham, The 55th World Economic Forum in Davos. David Beckham, Diane von Furstenberg and Rickham Yamamoto conferred with Gestel Award. David Beckham, Hungarian British author David Sazale wins the 2025 Booker Prize for his profound and haunting novel Flash. Hungarian British author है David Sazale wins the 2025 Booker Prize for his profounding and haunting novel Flash. ठीक है. David Sazale for his profounding and haunting novel Flash. ठीक है, आगे चलते हैं. A story of emotional detachment, desire and downfall. A story of emotional detachment, desire, desire एंड डाउनफॉल. तो बुक का नाम क्या है? फ्लैश है. ठीक है, मतलब एक तरीके से मान लो कि ठीक है फ्लैश मतलब मांस है तो डिटैच हो गया. अगर ये बॉडी इसने माना कि सब कुछ ऐसे ही तो क्या है मतलब शरीर क्या है? मांस है. बस ऐसा करके डिटैचमेंट है. डिज़ायर, डाउनफॉल. इंडियन रम चमिकारा wins Global Rum Brand of the Year at Spirits Business Award. London Chamicara. Tom Bruce finally receives starting my 2-hour test. Very good. I will also start my test once you finish your 2-hour test. Tom Cruise finally receives an honorary Oscar at the 2025 Governors Award in
Tom Cruise finally receives an honorary Oscars at the 2025 Governors Award in Los Angeles. 2025 ठीक है Governors Award in Los Angeles acknowledging over 40 years of cinematic achievement. आगे चलते हैं. आफ्टर एक सेकंड थोड़ा ट्रांसलेशन खुद से हो रहा है इसमें. क्या हो रहा है क्या नहीं. हाँ उसके बाद स्टार्ट होगा आपका टेस्ट. अच्छा मतलब 6:30. हेलो ब्रदर अमित शर्मा. Hello. Chalo, try to give it as soon as possible. Okay. So Tom Cruise finally receives an honorary Oscar at the 2025 Governor Awards in Los Angeles. ठीक है. Tom Cruise finally receives an honorary Oscar. ठीक है. In Los Angeles, acknowledging over 40 years of cinematic achievement. In Los Angeles, ठीक है. Acknowledging over 40 years of cinematic achievement. ठीक है आगे चलते हैं. I have also said the same as soon as possible. Anyway, good luck for your exam. And do tell us your score in the comment section. Tom Cruise finally receives take honorary Oscar Los Angeles acknowledging over 40 years of cinematic achievement. चलते हैं. नेक्स्ट आता है अपना video professor Arthur James win the prestigious Tansa Award 2022 in environmental science. Tansa Award in environmental science recognizing his outstanding contribution to marine research. Video professor Arthur James, historian Sunil Amrit wins 2025 British Academy Book Prize for The Burning Earth, a sweeping environment history spanning 500 years. सुनील अमृत को मिला ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज. सुनील अमृत को मिला है 2025 ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज. सुनील. India's State Bank of India clinches the prestigious world's best consumer bank award from Global Finance recognizing innovation. Award from Global Finance recognizing innovation and inclusion. Siri Singh makes history by winning India's first ever Miss Universe title in Manila. Inspiring. Siri Singh makes history by winning India's first ever Miss Universe नहीं है, Mrs. Universe है. Mrs. Universe title in Manila, inspiring millions with her message of empowerment and resilience. Siri Singh makes history. Siri Singh की शादी हो रखी है इसलिए मिसेस यूनिवर्स मिला है. ठीक है. कहाँ पे मिला? मनीला में. इंडिया का फर्स्ट एवर है सैरी सिंह ने. आगे Israel to confer presidential medal of honor on Trump for his role in brokering a Gaza ceasefire and aiding
hostage release. Brokering Gaza ceasefire and his role in aiding hostage releases. His role in aiding his role in brokering Gaza ceasefire. ठीक है. काजीरंगा डायरेक्टर सोनाली घोष. Okay, Kaziranga director Sonali Ghosh becomes first Indian to win the Cantor R. Miller Award for her innovative community-based conservation model. Innovative community-based. Okay. Kaziranga director Sonali Ghosh. Kaziranga director Sonali Ghosh becomes first Indian to win the Canton R. Miller Award. First Indian to win the Canton R. Miller Award. Canton R. Miller Award for her innovative community-based. Sonali Ghosh और कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन मॉडल. सोनाली घोष. घोष सुनते ही एनिमल ध्यान आना चाहिए. घोष सुनते ही एनिमल ध्यान आना चाहिए. सो एनिमल से ध्यान आ गया हमारे कि कैंटन आर मिलर अवार्ड मिला है फॉर कम्युनिटी बेस्ड. ठीक है. काजीरंगा के डायरेक्टर है. बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम तीर्थ विलेज धीरवाड़ wins UNDP Equator Prize 2025 for eco-friendly farming, millet promotion and women-led rural enterprises. ठीक है. बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप. बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप. बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप from Tirth Village, Dharwad. Bibi Fatima Self-Help Group from Tirth Village, Dharwad wins UNDP Equator Prize 2025. इक्वेटर नाम क्यों रखा है इसका? इक्वेटर प्राइज. इको फ्रेंडली फार्मिंग. ठीक है. आगे चलते हैं. बीबी फातिमा SHG फ्रॉम तीर्थ विलेज. बीबी फातिमा SHG फ्रॉम तीर्थ विलेज, धारवाड़. मनिका विश्वकर्मा फ्रॉम गंगानगर, राजस्थान wins Miss Universe in 2025 in Jaipur. She will represent India at the 74th Miss Universe. अच्छा, 74th मिस यूनिवर्स में कौन जीता था ये मैक्सिको की जीती थी फातिमा. ठीक है. मनिका विश्वकर्मा ने रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे 74th वाले में. आगे चलते हैं. इंडियन फिल्म मेकर अनुपर्णा रॉय विंस बेस्ट डायरेक्टर इन द इंडियन फिल्म मेकर अनुपर्णा रॉय विंस बेस्ट डायरेक्टर. अनुपर्णा रॉय विंस बेस्ट डायरेक्टर इन द horizontal section at the 82nd Venice Film Festival. Film festival for her film songs of Forgotten Trees. For her film song of Sudanese Scottish author Leila Sudanese PEN Pulitzer Prize for powerful writing on migration.
Okay, last 25 pages of this session. Okay, try to focus. Okay. Renowned Hindi author Gitanjali Sri, celebrated for her International Booker Prize winning novel of Sand, has once again captured global literary attention. सो कहने का मतलब है गीतांजलि श्री जिन्हें कि पहले इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिल चुका है फॉर हर बुकर प्राइज़ किस के लिए मिला था उन्हें फॉर नॉवल टॉम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री ठीक है गीतांजलि श्री टॉम ऑफ सैंड। आगे चलते हैं। गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सैंड के लिए मिला है वर्ष मिल चुका मतलब पहले वर्षा देशपांडे वेल नोन वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट फ्रॉम सतारा वाज गिवन द 2025 यूएन पॉपुलेशन अवार्ड वीमेन राइट एक्टिविस्ट है पॉपुलेशन अवार्ड फॉर स्ट्रॉन्ग एफर्ट टू स्टॉप सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। ठीक है वर्षा देशपांडे अ वेल नोन वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट फ्रॉम सतारा संबलपुर जैतपुर उदयपुर ये वही वाले हैं जो हिस्ट्री में आते हैं। ठीक है जो मतलब डलहौजी ने नहीं डॉक्टर ऑफ लैब्स में गए थे जो डलहौजी यहाँ। आगे चलते हैं। वर्षा देशपांडे वेल नोन ठीक है वही के सतारा से है। ठीक है शरण कुमार लिम्बाले a selected Maratha respected Marathi writer and literary critic has been chosen to receive the 2025 Chinta Ravindran Award. Ravindran Award. Sarah Kumar Limbale, David Beckham, the former England soccer captain, who has been an ambassador for the UN Children's Fund for 2 decades. It received knighthood honor from King Charles III. Fund for 2 decades. UN Children's Fund for 2 decades. Ambassador for the UN Children's Ambassador for the The former England soccer captain has been an ambassador for the UN Children's Fund. Ambassador for the UN Children's Fund. डेविड बेकहम ठीक है चलते हैं। इंडियन इंग्लैंड विल henceforth known as the जो पहले होती थी फॉर्मर नेम्स द पटौदी ट्रॉफी एंड द एंटोनियो डी मिल्लो ट्रॉफी। पटौदी ट्रॉफी एंड एंटोनियो डी मिल्लो अब हो जाएगी एडिशन जो पहले पटौदी ट्रॉफी वगैरह हुआ करती थी अब हो जाएगी हमारी
तो अपने आते हैं कि इंडिया एंड इंग्लैंड विल हैंसफोर्थ बी नोन एज द एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। ठीक है, पहले इसका नाम था पटौदी एंटोनी डी मेलो ट्रॉफी। आगे चलते हैं। दीपिका शेरावत विंस प्रेस्टिजियस पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड। दीपिका शेरावत विंस प्रेस्टिजियस पॉलीग्रास ग्रास मतलब हॉकी हॉकी की खिलाड़ी है ना ये। दीपिका शेरावत शायद वही है, हॉकी की है जहाँ तक मेरा ध्यान है। तो विंस प्रेस्टिजियस पॉलीग्रास मैजिक अवार्ड, मैजिक स्किल मतलब वही हॉकी में मैजिक जादूगर, हॉकी जादूगर किसे बोला जाता था। आगे चलते हैं। आगे अपने आते हैं कि रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया presented the National Florence Nightingale Award for the year 2025. National Florence Nightingale Award. National Florence Nightingale Award for the year 2025 to nurses. At a ceremony held, Florence Nightingale Award for the year to nurses. National Florence Nightingale Award. Nightingale Award. ठीक है। 2025 Holberg Prize is awarded to Indian scholar Gayatri Chakraborty. The 2025 Holberg Prize is awarded to Indian scholar Gayatri Chakraborty, Spivak of Columbia University. The 2025 Holberg Prize is awarded to Indian scholar Gayatri Chakraborty, Spivak of Columbia University for her groundbreaking interdisciplinary research in comparative literature. ठीक है। The 2025 Holberg Prize is awarded to Indian scholar Gayatri Chakraborty, Spivak of Columbia University for her groundbreaking interdisciplinary research in comparative literature. For her groundbreaking interdisciplinary research in comparative literature। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपैरेटिव लिटरेचर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। On 29 में ठीक है। द यूनियन ऑनर्स टू इंडियन पीस कीपर्स ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा एंड हवलदार संजय सिंह विद द दग हमर्स गोल्ड मेडल with the Dag Hammarskjöld gold medal. With the Dag Hammarskjöld medal. ठीक है। ओलंपिक गोल्ड मेडल has been honorary title of lieutenant colonel in the Territorial Army by the Indian government. Bhuvan Ribu becomes first Indian lawyer to receive World Law Congress honor. Bhuvan Ribu, first Indian lawyer. सो भुवन रिबो को इंडियन लॉयर
become first Indian lawyer to receive World Law Congress honor. Becomes first Indian lawyer. Becomes first Indian lawyer to receive. Becomes first Indian lawyer. Becomes first Indian lawyer to receive World Law Congress honor. ठीक है. Indian writer and activist Banu Mushtaq has etched her name in history. Has etched her name in history by securing the 2025 International Booker Prize for her Kannada. Banu Mushtaq Kannada story collection Heart Lamp जल गया. बानू लैंप जला दे. बानू लैंप जला दे. लैंप हो गया हार्ट का. बानू मुश्ताक हो गया. आगे चलते हैं. हार्ट लैंप. आगे आती है जयश्री वेंकटेशन को फाउंडर ऑफ केयर अर्थ ट्रस्ट. जयश्री वेंकटेशन को फाउंडर ऑफ केयर अर्थ ट्रस्ट recently made history as the first Indian to receive the Ramsar Award for wetland wise use. Jayashree Venkatesan, co-founder of Care Earth Trust. Jayashree Venkatesan, co-founder of Care Earth Trust, recently made history as the first Indian to receive the Ramsar Award. First Indian to receive the Ramsar Award for wetland. Jayashree Venkatesan, co-founder of Care. Jayashree Venkatesan. Marangela, Hungary, Brazilian microbiologist has received the 2025 World Food Prize for her pioneering research in biological nitrogen fixation. Rapper Raja Kumari becomes world's first Indian origin musician to win Emma Award. Indian singer-songwriter to win Emma Award. To further by pioneering research in biological nitrogen fixation. ठीक है. Madhusudan Sai, a prominent humanitarian was recently honored. A prominent humanitarian was recently honored by Fiji with the champion of the Order of Fiji. With the champion of the Order of Fiji for his exceptional contribution to healthcare and social welfare. Exceptional contributions to healthcare and social welfare. ठीक है. आगे चलते हैं. रैपर राजा कुमारी becomes first Indian origin musician to win Emma Award. Indian singer-songwriter Raja Kumari wins Emma. Arcane League of Legends soundtrack Jayashree Venkatesan, co-founder of Care Earth Trust, recently made history. First Indian Jayashree Venkatesan, Ramsar Award. Jayashree Venkatesan.
रामसर अवार्ड, आगे चलते हैं। जयश्री वेंकटेश्वर रामसर अवार्ड, आगे चलते हैं। Madhusudan Sai, a prominent humanitarian, was recently honored by Fiji with the Champion of the Order of Fiji। ठीक है, तो ये था। जयश्री वेंकटेशन भी हो गया, आगे चलते हैं। पायल कपाड़िया, द अक्लेम्ड फिल्म मेकर। पायल कपाड़िया, द अक्लेम्ड फिल्म मेकर behind All We Imagine as Light, has received the prestigious All We Imagine as Light has received the prestigious All We Imagine as Light has received the prestigious Officer of the Order of Arts and Letters। Officer of the Order of Arts and Letters। क्या कहते हैं? हाँ, कुछ समझ में नहीं आया।
Captain Rajesh Unni, founder of Synergy Marine Group. Masaki Kashiwara has been awarded with the 2025 Abel Prize for his exceptional contribution to algebraic analysis and representation theory. Kashiwara Masaki, mathematician Masaki Kashiwara. Masaki Kashiwara. Masaki Kashiwara. Masaki Kashiwara. Masaki Kashiwara. मशाकी काशीवारा। ठीक है, आगे चलते हैं। मशाकी काशीवारा। फिर अपने आते हैं renowned hydrologist Gunter Bloschel. Gunter Bloschel has been honored with the 2025 Stockholm Water Prize. वाटर को याद कर लेंगे गटर से। गटर for his pioneering work in food risk analysis and water resource management. Italy confers the Cavalier d'Ordine della Stella d'Italia Award on Goa industrialist Srinivas Tempo for strengthening India-Italy ties and cooperation. Industrialist Srinivas Tempo. The 13th edition of joint military exercise Khanjar will be conducted at Mishamari, Assam. 13th edition है खंजर। The 13th edition of joint military exercise खंजर will be conducted at Mishamari, Assam। ठीक है। Exercise अग्नि परीक्षा is a joint Indian Army ITBP training exercise. Army ITBP training exercise conducted in Arunachal Pradesh to enhance combat synergy and artillery integration. अग्नि परीक्षा है आईटीबीपी की तहत ऐसे आ जाते हुए आर्मी के साथ में अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा इज अ जॉइंट इंडियन आर्मी आईटीबीपी ट्रेनिंग एक्सरसाइज। अग्नि परीक्षा इज अ जॉइंट इंडियन आर्मी आईटीबीपी ट्रेनिंग एक्सरसाइज। जॉइंट इंडियन आर्मी आईटीबीपी Joint Indian Army ITBP training exercise conducted in Arunachal Pradesh। ठीक है। To enhance combat synergy and artillery integration। To enhance combat synergy and artillery integration। combat synergy and artillery integration। 13th edition of joint military exercise खंजर का 13th edition है। तेरा खंजर खोप दिया ऐसा करके होता है ना। at Mishamari, Assam। Air drill with Thailand। IAF conducts joint air drill with Thailand near the Malacca state as Gripen AP under India's 114
pushes Graper under 114 MR multi-role fighter aircraft program boosting India into Shab pushes Gripen. Joint air drills with Thailand. In the state of Malacca, near the Malacca state. Joint air drills with Thailand. IF conducts joint air drills with Thailand. IF conducts joint air drills with Thailand. ठीक है. IF conducts joint air drills with Thailand. आगे चलते हैं. Exercise Maitri India and Thailand begin. Maitri 14 in Meghalaya to strengthen counter-terrorism skills. To strengthen counter-terrorism skills. To strengthen counter-terrorism skills, interoperability, and regional defense cooperation. Counter-terrorism skills, interoperability, counter-terrorism skills, interoperability, counter-terrorism skills, interoperability. Counter-terrorism skills, interoperability, and regional defense cooperation. मेघालय में मैत्री भी ठीक है. मैत्री to strengthen counter-terrorism skills, interoperability. To strengthen counter-terrorism skills, ठीक है. To strengthen counter-terrorism skills, ठीक है. To strengthen counter-terrorism skills, interoperability, and regional defense cooperation. To strengthen counter-terrorism skills, आगे चलते हैं. इंडिया यूएई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2. इंडिया यूएई आगे चलते हैं. आगे इसमें क्या है? इंडिया यूएई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2. यूएई के साथ में डेजर्ट, तो वहाँ पे है डेजर्ट साइक्लोन 2 कंडक्टेड इन अबू धाबी. The Indian contingent consisted of 45 personnel, mainly from a battalion of the mechanized infantry regiment. From a battalion of the mechanized infantry. From a battalion of the mechanized infantry regiment. Desert cyclone. यूएई में साइक्लोन आएगा क्या? नहीं आएगा यूएई में साइक्लोन. यूएई में साइक्लोन नहीं आएगा. आगे चलते हैं.
India UAE joint military exercise Desert Cyclone 2 concluded in Abu Dhabi. The Indian contingent consisted of 45 personnel, mainly from a battalion of the mechanized infantry. India UAE. ठीक है, आगे चलते हैं. India, Maldives and Sri Lanka have launched exercise Dosti in Malé. Maldives and Sri Lanka तीनों है, ठीक है. एक्सरसाइज दोस्ती in Malé to enhance maritime cooperation and collective security in the Indian Ocean. आगे चलते हैं. Pakistan and the US are holding 2-week-long joint anti-terrorism exercises at a counter-terrorism center. Pakistan and the US are holding 2-week-long joint anti-terrorism exercise at a counter-terrorism center in Punjab province of the country. It was announced on Saturday, 13th Pakistan-United States bilateral joint exercise inspired Gambit 2026. Recently, the 5th edition of exercise Harimo Shakti commenced in Maharaja Field Firing Range, Rajasthan. It is a joint military exercise conducted between India and Malaysia. So, ये जो अपनी एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति है 2025 में हुई, जो कि इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है. जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया. रिसेंटली द 5th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति, रिसेंटली इसका 5th एडिशन हुआ है. कमेंस्ड इन महाराजा फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान. कमेंस्ड इन महाराजा फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान. ठीक, 5th एडिशन है, 5th. आगे चलते हैं. एक्सरसाइज इक्विवेलेंट. India and Maldives began exercise equivalent in Kerala. India and Maldives began exercise equivalent 2025 in Kerala to boost military cooperation. India and Maldives began exercise equivalent. India and Maldives began exercise equivalent 2025 in Kerala. India and Maldives began exercise equivalent 2025. इंडिया एंड मालदीव्स बिगन एक्सरसाइज इक्विवेलेंट. मालदीव्स के साथ में दोस्ती भी है, मालदीव्स और श्रीलंका के साथ में, लेकिन ये एक्सरसाइज इक्विवेलेंट 2025 इन केरला टू बूस्ट मिलिट्री कोऑपरेशन, to boost military cooperation, interoperability and regional capabilities. To boost military cooperation, interoperability, ठीक है. Interoperability and regional security capabilities. आगे चलते हैं. Regional security capabilities. 45 Indian Army personnel represented by battalion of the Garhwal Rifles. Garhwal Rifles. आगे चलते हैं. The 10th edition of the India-Indonesia Joint Special Force Exercise Garuda Shakti will be conducted at the Special Force Training. 10th edition of the India-Indonesia Joint Special Force Exercise Garuda Shakti. The 10th edition of the India-Indonesia. The 10th edition of the India-Indonesia. The 10th edition of the India-Indonesia. The 10th edition of the India-Indonesia Joint Special Force Exercise. The 10th edition of the India-Indonesia Joint Special Force Exercise Garuda Shakti will be conducted at a Special Force Training School, Baklo. At the Special Force Training School. At the Special Force Training School.
the Special Force Training School, Bucklow, from 3 to 12 December 2025. At the Special Force, at the Special Force, at the Special Force Training School. At the Special Force Training School, Bucklow, from 3 to 12 December 2025. 3 to 12 December 2025. Exercise Chanakya 2025. Chanakya Defense Dialogue 2025 highlights India's three-phase military transformation. Chanakya Defense Dialogue 2025. Chanakya Defense Dialogue 2025 highlights India's three-phase military transformation plan focusing on indigenization, technology, multi-domain warfare. 19th edition of India-Nepal Joint Exercise Surya Kiran 19th. Surya Kiran 19th starts in Pithoragarh, focusing on counter-terrorism, HAD, human assistance, and disaster relief, and new warfare technologies. Exercise Ajay Warrior 2025. Ajay Warrior 2025. The Indian-UK joint military exercise began in Rajasthan with 240 troops. Ajay Warrior 2025. The India-UK joint military exercise. Ajay Warrior 2025. India-UK joint military exercise began in Rajasthan with 240 troops. Begins in Rajasthan with 240 troops training for counter-terror operations under a UN mandate. Under a UN mandate. आगे चलते हैं। इसी में अपने आगे थे जैसे वॉरियर हो गया, ठीक है, इंडिया यूके हो गया था। राजस्थान में इंडियन एयरफोर्स joins French Air and Special Force for Exercise Garuda 2025. Exercise Garuda 2025 in France, enhancing interoperability, tactical coordination and operational synergy. Tactical coordination and operational synergy. Tactical coordination and operational synergy. Tactical coordination and operational exercise called Indian UK Navy's held their first combined carrier strike group exercise. Held their first combined carrier strike. First combined
First, combined carrier strike group exercise during exercise Konkan strengthening strategic maritime ties. INS Vikrant, India's first indigenously built aircraft carrier. HMS Prince of Wales, UK's 65,000-ton Queen Elizabeth class aircraft carrier. Prince of Wales, HMS Prince of Wales, exercise Australian, Indian Australia government's Australian platform to boost military cooperation and interoperability in urban warfare. में इन पर्थ में हुई है, पर्थ में हुई है। ठीक आगे चलते हैं, पर्थ में हुई है। पर्थ में क्या वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन एक्सरसाइज हुई थी, मैं तो पता नहीं होगा। यहाँ पे ऑस्ट्र हिंद एक्सरसाइज हुई थी, ऑस्ट्र हिंद। पर्थ में हुई थी, एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। इंडिया इंडोनेशियन नेवीज की फिफ्थ समुद्र शक्ति एक्सरसाइज इन विशाखापट्टनम from 14 to 17 October to boost maritime interoperability, representing India in the INS Kavaratti. India is the INS Kavaratti. कौन करने गया था INS विक्रम? यूके तो अपना पहला इंडिजिनसली बिल्ट दिखाएंगे ना, यूके के तो अपना पहला इंडिजिनसली बिल्ट दिखाएंगे। यूके का तो अपना पहला इंडिजिनसली बिल्ट दिखाया हमने, ठीक है। इसका नाम था INS विक्रांत। INS विक्रांत के बाद अपना जो INS समुद्र शक्ति आया, उसमें हमने किया फिफ्थ एडिशन था। पहली बात तो वो INS कवारत्ती गया, उसमें फिफ्थ एडिशन में INS कवारत्ती गया, ठीक है। INS कवारत्ती an indigenously built anti-submarine warfare corvette. Anti-submarine warfare corvette. In broken naval exercise, India and South Korea began in ROK naval exercise in Busan, enhancing maritime cooperation with joint drills between INS Sahyadri and Gyeongnam. Joint drills between INS Sahyadri and ROKS Gyeongnam. With joint drills between INS Sahyadri and ROKS Gyeongnam. Between INS Sahyadri and ROKS Gyeongnam. INS Sahyadri and ROKS Gyeongnam. INS Sahyadri and
enhancing maritime cooperation with joint drills between with the joint drill. जॉइंट ड्रिल्स बिटवीन आइना शाहयादरी था इसमें, ठीक है। इंडिया एंड साउथ कोरिया बिगिन। इंडिया और साउथ कोरिया in Rokan naval exercise. इन रोकन नेवल एक्सरसाइज क्या नाम है? इन रोकन नेवल एक्सरसाइज का मतलब मौसम में एनहांसिंग, ठीक है। इंडियन इंडोनेशियन नेवीज की को फिफ्थ समुद्र शक्ति एक्सरसाइज, समुद्र इंडोनेशिया के साथ में है क्या? इंडिया का समुद्र, ठीक है। यहाँ पे गया था इंडिया का आइनस कवारत्ती विशाखापट्टनम में हुई थी। समुद्र शक्ति आइनस कवारत्ती गया था विशाखापट्टनम में ये हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। समुद्र शक्ति आइनस कवारत्ती दिसंबर वॉरफेयर कॉर्वेट। आगे चलते हैं। आइनस शाहयादरी, ओके। कवारत्ती कवारत्ती। Indian Thailand began exercising in Meghalaya to strengthen counterterrorism skill, interoperability, and regional defense cooperation. Interoperability and regional defense cooperation. Indian Forces depart for Russia to participate in multilateral exercise. Japan, focusing on joint operations and military interoperability. In Japan. Exercise अभ्यास, Indian Army joins US troops in Alaska. और ये अभ्यास, a 2-week long military exercise focused on tactical training and joint operations. The Indian Army is represented by a battalion of Madras Regiment. मद्रास के लोग यूके में बहुत है, यूएसए में बहुत गए हैं। द इंडियन आर्मी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बटालियन ऑफ द मद्रास रेजिमेंट। द इंडियन आर्मी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बटालियन ऑफ द मद्रास रेजिमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का कोई आगे नहीं होने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Indian Army is represented by a battalion of the Madras Regiment. Indian Army joins US troops in Alaska for युद्ध अभ्यास। 2-week long Madras tactical training and joint operations। आगे चलते हैं। India to deploy over 700 personnel for exercise Bright Star 2025 in Egypt, enhancing tri-service interoperability and military ties with friendly, and enhancing tri-service interoperability
enhancing tri-service interoperability, ठीक है। In military ties with Gandhi nations, except Bright Star in Egypt, Bright Star, अच्छा ठीक है, Bright Star Egypt में, ठीक है। The Indian contingent comprising personnel from the Indian Army Force will engage in a range of advanced military activities. आगे चलते हैं। Exercise Bold Kurukshetra 2025, Bold Kurukshetra 2025 exemplifies the maturing defense collaboration between India and Singapore, focusing on urban combat readiness, counter-terrorism, and real-time strategic cooperation, connecting the demanding target in case of both countries' commitment. Indian Navy is participating in the 32nd edition of SIMBEX, Singapore India Maritime Bilateral Exercise. Singapore India SIMBEX 32nd एडिशन था सिम्बैक्स का, हालांकि अर्बन कॉम्बैट, ठीक है। सिम्बैक्स में ये होगा, ठीक है, मैरीटाइम है, ठीक है। एडिशन ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन विद द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी। The Indian Navy contingent includes INS. Indian Navy contingent includes INS दिल्ली destroyer, ठीक है, INS सतपुरा frigate, INS किल्टन corvette. The Indian Navy contingent includes INS Delhi, ठीक है। The Indian Navy contingent includes INS Delhi destroyer, INS सतपुरा frigate है, ठीक है। एंड INS किल्टन corvette है। INS शक्ति फ्लीट सपोर्ट शिप है। इंडियन नेवी के कंटिजेंट में कौन कौन था जो सिम्बैक्स एक्सरसाइज में था? INS दिल्ली था, डेस्ट्रॉयर है, ठीक है। दिल्ली डेस्ट्रॉय करने की बात चलिए, ऐसा करके मान लो, ठीक है। INS सतपुरा फ्रीगेट है, आगे चलते हैं। और अपना जो INS किल्टन है वही कॉर्वेट है, INS किल्टन, ठीक है। INS सतपुरा फ्रीगेट हो गया, ठीक है। INS किल्टन कॉर्वेट है, ठीक है। सतपुरा फ्रीगेट, सतपुड़ा ऐसे करके फ्री, आगे INS किल्टन कॉर्वेट है। एंड INS शक्ति एक फ्लीट सपोर्ट, INS शक्ति क्या है? फ्लीट सपोर्ट शिप है। सपोर्ट कौन देता है? शक्ति देती है, शक्ति, तो शक्ति हो गया, ठीक है। किल्टन में कॉर्वेट है, INS किल्टन एक कॉर्वेट। आगे चलते हैं। अब अपना आते हैं एक्सरसाइज प्रचंड शक्ति। राम डिवीज़न ऑफ द इंडियन आर्मी कंडक्टेड अ मिलिट्री ड्रिल। राम डिवीज़न ऑफ द इंडियन आर्मी कंडक्टेड अ मिलिट्री ड्रिल नेम्ड प्रचंड शक्ति, ठीक है, इन मेरठ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। टू शो हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक ड्रोन्स एंड AI tools can improve the army's strength in future warfare. ओके, राम डिवीज़न एक्सरसाइज प्रचंड शक्ति यही मेरठ में हुई थी, इसका मतलब, ठीक है। और ड्रोन्स वगैरह का यूज उसमें किया गया, लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक ड्रोन्स एंड AI टूल्स। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज तालिस्मान साबरे। इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट डिफेंस एक्सरसाइज तालिस्मान साबरे फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट डिफेंस एक्सरसाइज। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है तालिस्मान साबरे फॉर द फर्स्ट टाइम। द इवेंट विच बिगेन ऑन 13 जुलाई 2025 includes 19 countries working together to improve military cooperation and security in the Indo-Pacific। 19 कंट्रीज़ थी इसमें, ठीक है। 19 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। तालिस्मान साबरे ऑस्ट्रेलिया की बिगेस्ट डिफेंस एक्सरसाइज है, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सरसाइज दिव्या दृष्टि। द इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड एक्सरसाइज दिव्या दृष्टि इन द हाई एल्टीट्यूड रीजन्स ऑफ ईस्ट सिक्किम के हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में हुई थी दिव्या दृष्टि। हाई एल्टीट्यूड में देखने के लिए क्या चाहिए हमें? हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में देखने के लिए एक तरीके से देखा जाए तो हमें मतलब दिव्या दृष्टि चाहिए, और ये सिक्किम की साइड मान लो, ठीक है, ईस्ट सिक्किम। इंडियन आर्मी ने करी थी, इंडियन आर्मी ने, टू टेस्ट एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़। ये ऐसा कुछ नहीं है कि बाईलेटरल है या मल्टीलेटरल है, ओनली इंडियन आर्मी है इसमें, ठीक है। इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड एक्सरसाइज मिलिट्री Indian Army recently conducted
Indian Army recently conducted exercise. Indian Army recently conducted exercise Divya in the high altitude. Indian Army recently conducted exercise. Indian Army recently conducted exercise. आगे चलते हैं फिर अपना आते हैं किस पे कि दालिचमान साहब ने ये कर लिया, हमने दिव्य दृष्टि कर लिया. Indian Army recently conducted exercise Divya Drishti in the high altitude regions of East Sikkim to test advanced military technologies. ठीक है. एक्साइज खान क्वेस्ट किसके साथ में है? तजाकिस्तान, मंगोलिया. द इंडियन आर्मी कंटिजेंट रीच्ड उलान बटोर, मंगोलिया. The exercise will bring together military forces from around the world to collaborate and enhance their peacekeeping capabilities. Last edition conducted in Mongolia. Battalion of Kumaon Regiment along with personnel from other arms and services. Battalion of Kumaon Regiment along with personnel from other arms and services. ठीक है. Indian Army contingent reached Ulaanbaatar, Mongolia. Indian Army contingent reached Ulaanbaatar, Mongolia. Indian Army contingent reached Ulaanbaatar. जैसे क्या बोला, खान मंगोलिया में जो है खान क्वेस्ट, मंगोलिया खान क्वेस्ट. ठीक है. इंडियन आर्मी कंटिजेंट reached Ulaanbaatar, Mongolia. Indian Army contingent reached Ulaanbaatar, Mongolia. Indian Army contingent reached Ulaanbaatar, Mongolia. ठीक है. Exercise will bring Indian Army contingent reached Ulaanbaatar. ठीक है, आगे चलते हैं. खान क्वेस्ट, मंगोलिया. Exercise Tiger Claw 2025. Exercise Tiger starting first section completed. Shabash. Starting the second one. Very good. Okay, you are starting second one. I'm on page number 99, and just after one page, like after completing 101 pages, I will also start my NTPC test. Okay. So there was slight disruption in the live.
एक्सरसाइज टाइगर क्लो रस्ती हो गया, ठीक है। ये कॉन्क्वेस्ट मंगोलिया में। टाइगर क्लो द फर्स्ट एवर इंडिपेंडेंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज बिटवीन द फर्स्ट एवर इंडिपेंडेंट द फर्स्ट एवर इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट हो गया था, ठीक है। अपना बात है इस पे। एक्सरसाइज टाइगर क्लो जो है, एक्सरसाइज टाइगर क्लो द फर्स्ट एवर इंडिपेंडेंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है। टाइगर क्लो जो है दैट इज फर्स्ट एवर इंडिपेंडेंट ठीक है। It is Dherwad. Dherwad means UNDP. Axis Tiger Glow, the first ever independent स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज, ठीक है। इंडिपेंडेंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है ये। अच्छा, इंडिपेंडेंट फर्स्ट एवर पहले बात तो टाइगर क्लो इंडिपेंडेंट फर्स्ट एवर इंडिपेंडेंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज बिटवीन IAF एंड USAF concluded at the Garud Regimental Training Center yesterday. Garud Regimental Training Center. The Garud Regimental Training Center yesterday conducted at various locations in North India. The exercise objective included expanding partnership, mutual exchange of best practices. Exercise objective included expanding partnership, ठीक है, partnership, mutual exchange of best practices, mutual exchange of best practices in special operations, and joint mutual exchange of best practices in special operations. Exchange of best practices. Mutual exchange of best practices. Mutual exchange of best practices and special operations and joint training between the two air force with interoperability. एक्सरसाइज क्या लिखा है, एक सेकेंड। थोड़ा कुछ ग्लिच है डिस्प्ले पे, दिख नहीं पा रहा अच्छे से, पर कोई बात नहीं। आई एम नॉट एबल टू रीड मैसेजेस, इफ एनीवन ऑफ यू इज डूइंग मैसेज प्लीज, sorry I won't be able to read the messages. Will be exercise Shakti will be held at La Cavalerie in France. La Cavalerie in France from June 18 in La Cavalerie, ठीक है। Exercise Shakti 2025 will be held at La Cavalerie in France. La Cavalerie in France from June 18. La Cavalerie in France at La Cavalerie in France from June 18 in La Cavalerie. It is joint military exercise between the India and France. It is a biennial event conducted alternatively in India and France. Biennial event conducted alternatively in India and France. Alternatively in India and France, ठीक है। बाइनल इवेंट है, एक बार इंडिया में होता है और एक बार होता है फ्रांस में। इट इज़ एट्थ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज शक्ति एंड लास्ट टाइम इट वाज हेल्ड इन इंडिया बिकॉज इस बार ये फ्रांस में हो रहा है। 100th पेज पे एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 17th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज नोमैडिक the 17th edition of India Mongolia Joint Military Exercise Nomadic Elephant 2025 underway at the Special Force Training Center in उलान बतौर पे हमने एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट भी करी थी। मतलब मंगोलिया के साथ अपनी काफ़ी एक्सरसाइज होती है।
एक चीज़ मंगोलिया भी होती है शायद। वाइट एलिफेंट वगैरह कौन सी है? और ये नोमैडिक नोमैडिक है, नोमैडिक एलिफेंट है। उड़ान बतार में ये होगी, ठीक है। मंगोलिया हो गया, आगे चलते हैं। सेवनटीन्थ एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज मंगोलिया, एडिशन ऑफ द इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। 17th एडिशन है, ठीक है। इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025 एट द स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग सेंटर in Ulaanbaatar in the Indira exercise 2025. Exercise between India and Russia held from 28 March to April 2, 2025 marked the 14th edition of this annual naval drill. 14th edition याद रहेगा। This marks the 14th edition of the exercise which aims to strengthen maritime cooperation. अपना 101 पेज पे आते हैं। 101 exercise Dust Lake, the 6th edition of the India Uzbekistan joint military exercise Dust Lake of उज़्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान नहीं है, इस बात को याद रखना। उस यू देखो मतलब डस्ट से एलर्जी है ना, यू जैसे बोल देते देखो डस्ट से एलर्जी है, तो हम बोल देंगे यू। जैसे कोई बोल दे कि देखो डस्ट से एलर्जी है तो हम क्या बोलेंगे? किसी कोई बोले कि डस्ट से एलर्जी है तो हम क्या बोलेंगे? यू। कोई बोले कि देखो डस्ट से एलर्जी तो उज़्बेकिस्तान बोलेंगे, ठीक है। उज़्बेकिस्तान यू हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लेक किक्ड ऑफ ऑन अप्रैल 16 6th एडिशन था। एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन पुणे में हुई, पुणे। एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन पुणे at the foreign training node in Pune. आगे चलते हैं। द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन पुणे हो गया, ठीक है। डस्ट लेक पुणे में हुई है, ठीक है। इधर ही हुई है इंडिया में। दिस bilateral exercise continuing until April 28 focuses on enhancing interoperability through sub-conventional warfare simulations in semi-urban. The 12th edition of the India-Kyrgyzstan Joint Special Force Exercise Khanjar 12। खंजर तो मैं 13th का देखा था ना, इंडिया किर्गिस्तान। खंजर 13th में करी है। अच्छा 13th एडिशन भी इसका हो चुका मुझे लग रहा है। किर्गिस्तान में तो हुआ है ये इसका, लेकिन इंडियन आर्मी कंटिजेंट इन खंजर सर्विस प्रेजेंटेड बाई ट्रूप्स फ्रॉम द पैराशूट रेजिमेंट, ठीक है। किर्गिस्तान, लेकिन शायद इसका स्टार्टिंग के पेजेस में लिखा है इसका 13th एडिशन भी हो चुका मुझे लग रहा है। खंजर पे 13th एडिशन ऑफ खंजर आई थिंक हो चुका है। खंजर का 13th एडिशन। अभी हम देखते थोड़ा सा ऐसे बाय देन आई थिंक लैपटॉप इज नॉट वर्किंग, दैट इज व्हाट इज डूइंग। 13th एडिशन of खंजर खंजर एक्सरसाइज। अच्छा हो चुका 13th एडिशन इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर टुक प्लेस फ्रॉम 4 to 17 February 2026 in Samari military station in सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। अच्छा
पैरासूट रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट करा था 13th वाले में भी। स्पेशल फोर्स है पैरासूट रेजिमेंट एंड किर्गिस्तान Elbaris Special Force Brigade engaged with approximately 20 personnel each. Special Force operation within urban and mountain settings. Okay. Okay. Next चलते हैं 101 पेज तक हमने कर लिया. Now it's time to do a test. टेस्ट करते हैं. अभी हम यहाँ पे जल्दी एक टेस्ट करेंगे.
इफ मोड इन द एट एंड मीन माइनस मीडियन जितना मीन माइनस मीडियन फाइंड आउट दिस मीन। तो बेसिकली होता कितना है, 3 मीन इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड मोड इक्वल्स टू यहाँ पे मीन आता है। सो ये जो मीड है, जो अपना मोड है वो तो 8 है। 3 मीडियन कितना है, मीडियन इक्वल्स टू मीन माइनस 12 मीडियन इक्वल्स टू मीन माइनस 12 माइनस 2 मीन 3 माइनस 2 मीन माइनस 36 इक्वल्स टू 8 मीन इक्वल्स टू 44। लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर वाज बिल्ट इन लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर। नॉर्थ के टेम्पल तो नागरा स्टाइल में है ना, कलिंग स्टाइल हो सकता है। हु वाज नोन एज देवनामप्रिय प्रियदर्शनी अशोक मौर्य को बोलते थे। इन सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज इंडिया इज रिटन एज, तो आई को डब्ल्यू लिखा है ना। अगर देखा जाए तो इसने ए में 27 में 4 माइनस करे, 9 में 4 माइनस करे हैं, डी में 4 माइनस करे हैं, 14 में 4 माइनस करे हैं, 9 में 4 माइनस करे। ठीक है, डी में 4 माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा, जेड जे जेड जे जेड जे का तो एक ही है ना। तीन प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 गुना 5 प्लस 6 गुना कर ले, 80 सिक्का 480 480 और 30 510। सीरीज ऑफ नंबर्स आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। कौन सी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि 325 में 105 और 94, तो ये देखोगे यहाँ पे कितने माइनस करें, 25 और 41, 66 माइनस करें। यहाँ पे कितने माइनस करें, 57 माइनस करें। यहाँ पे 2 और 7 62, 2 माइनस करें और फिर 40 माइनस करें, 42 माइनस करें। यहाँ पे 30 और 33 माइनस करें, यहाँ पे 22 माइनस करें, यहाँ पे 5 और 6 11 माइनस करें, 11 22 33 चौका 44। तो यहीं पर आएगा डिफरेंस। एक बात समझो कि यहाँ पे 55 माइनस जब तो करेगा तो 204 बचने चाहिए थे, इससे ही यहाँ पे 44 आता है। 2 से 2 गलती है। अब ये देखो 85 में 13 चौक 52, 130 दुगना कर दो अगर मैं 104 में 185 जोड़ दो, 188 प्लस 10 मान लो, दुगना जोड़ दो अगर मैं, दुगना नहीं जोड़ना। डिफरेंस करने का डिफरेंस कितना है, 33 3 सा 6 सा, डिफरेंस करो कितना है, 35 है, 35 6 है, 180 और 30, डिफरेंस कितना 35 है, सॉरी 45 है ना, 240 और 30 270। ठीक है, डिफरेंस करना है।
डिफरेंस आएगा 15 17 17 आएगा और 15, डिफरेंस कितना है 14 सिक्का। यहाँ पे कितना है 15 सिक्का 90। चिलका लेक सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। चिलका लेक ओडिशा में है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच यूनियन टेरिटरी, चिलका लेक ओडिशा में। आगे चलते हैं। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ इट्स ओन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। दिल्ली एंड पुडुचेरी, दिल्ली एंड पुडुचेरी है ना। इन द सर्टेन लैंग्वेज कोड हैंग इज रिटन एज एच को 4 प्लस कर दिया। 7 में 5, 14 5 19, 1 में 5 6, 8 5 13, डब्ल्यू में 5, 23 5 28, 1 में 5 6 प्लस कर दिया। 1 में 5 6 प्लस कर दिया, ठीक है। 1 में 5 प्लस 7 5 12, 5 प्लस कर दिया 19, 5 6 5 प्लस कर दिए और 5 13, ठीक है। 5 प्लस करें 3 5 28, 2 आ गई, इसमें प्लस करेगा 5 ही हो गया 18 6 24, 18 5 ही तो प्लस कर रहे हैं ना। 18 5 23, 23 का अलग कितना आता है। Is the following is an award for contribution in the field of science and technology। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में शांति स्वरूप अवार्ड है, शांति स्वरूप भटनागर। All birds are cows। All birds are cows। All birds are cows। Some cows are hens। Some cows are hens। Some dogs are birds। Some dogs are birds। Some dogs are hens। Some dogs are hens। नहीं, कुछ डॉग ऐसे है ना, ठीक है। सारे के सारे ऑल बर्ड्स आर काउ। सम डॉग्स आर हेन जरूरी नहीं है ना, यानी कि ये है तो, लेकिन ये सारे के सारे इसके अंदर तो है, ये सारे का काउ है। कुछ ये है, कुछ है नहीं। नो हैंड्स आर बर्ड्स। नो हैंड्स आर बर्ड्स। नो हैंड्स आर बर्ड्स। नो हैंड्स आर बर्ड्स। कुछ हैंड्स ये है तो कुछ हैंड्स तो ये भी गलत है। सम काउज आर डॉग्स। सम काउज आर डॉग्स। सम काउज आर डॉग्स। सम काउज आर डॉग्स। सम काउज आर डॉग तो है, कुछ काउ जो है वो डॉग्स हैं। Some apartments are bungalows। Some apartments are bungalows। Some bungalows are flats। Some bungalows are flats। Some apartments are flats। Some apartments are flats। Some flats are bungalows। Some flats are bungalows। Only conclusion to follow। आगे चलते हैं। 7 में 18 एक प्लस ही कर रहे हैं सब में। एक प्लस करा बी बन गया सी। 1 प्लस करा सी आएगा ना, बी और सी से स्टार्ट होगी।
ओके, ये इसका एंड इसके स्टार्ट में आएगा, तो इसका एंड जो है वो इसके स्टार्ट में क्रॉस करने से आया क्या, नहीं आ रहा लेकिन। सो देख 18 1 19, 18 और 1 19, 18 1 4 1 13 11 12 7 8। हाँ, इसने पूछा है इसके बाद क्या आएगा, तो इसके देख ले 7 7 जोड़, 7 में कितने जोड़ेंगे, 12 जोड़, 12 जोड़ 12, 12 जोड़ 13 12 25। जी टी टी में से एक कम है, इसका प्रोजेक्ट एम एन में से एक कम है, एम 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 चलते 14। अब ये है इतना कि बाबू ने बताया होता कि यह पहले बाबू ने बताया कि ऐसे देखते हैं कि इसमें जे में क्या प्लस हुआ, जे में जो जे यू क्यों को ये बीच वाला आगे और ये बदल गया, ठीक है, ये दो चेंज हो गया आपस में, बस ये दो चेंज हो गए, ये दो आपस में चेंज हुए नहीं हुआ। अब ये देख लें जे क्यू जो का जो जे क्यू है वो पहले दो ये ऐसे बन गए, ये आगे। अब ये देख लें, ये पहले दो ऐसे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, एम पी और ऐसे ऐसा आगे, इसका क्यों आगे, इसका क्यों आगे। 15 16 में 4 माइनस 6 माइनस करें, 6 माइनस करें, 27 में 6, 20 में 6, तो कहने का मतलब है कि 4 28 में 6 माइनस करेगा तो कितना आएगा, 26 और 6, 26 और 4 30, 30 में 6 माइनस करेगा 24 आएगा, 26 और 5 31, 31 में 6 माइनस करेगा तो 25 आएगा, 32 में 6 माइनस करेगा तो 6 आएगा, 2 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 25 में 6 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 24 में 6 गए, इसमें ये कहा कि 2 माइनस करें, इसमें 6 माइनस करें तो 7 माइनस करें, 7 ही माइनस करता है। What will the result if the first digit of the second greatest number, first digit of the second greatest number, सबसे greatest कौन है, 567, second greatest कौन है, यही था second greatest, first digit of the second greatest number is added to the third digit of the smallest number. Whom of the following introduced the blue water policy, Cartesian system, Alfonso Di Bruno को।
Saudi Arabia को तो नहीं है ब्लू वाटर पॉलिसी बड़ा Nino the Kunna. How many such numerals are there in the above arrangement which are immediately followed by a symbol? So number symbol and immediately preceded by a letter number symbol letter number symbol letter number symbol letter letter number symbol 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 symbol एक symbol है इसके पहले नंबर है लेटर नहीं है सिंबल के बारे नंबर है सिंबल के बारे नंबर ही नहीं आया भाई सिंबल के बारे नंबर ही नहीं आया सिंबल के बारे नंबर दे सिंबल के बारे नंबर दे लेटर नहीं आया सिंबल के बारे नंबर दे सिंबल के बारे नंबर दे और फिर लेटर दे आ गया एक सिंबल के पहले एक ला रहा है मेरे को Lois walks 7 kilometer. Lois walks 7 kilometer in the east. 7 kilometer in the east. Then he turns to his right and moves 20 kilometer. Then he turns to his left. And walks 5 kilometer. Then he turns to his left and moves 11 kilometer. Then again turn to his left and moves 12 kilometer. Now in which direction is he from his starting point and how far? Starting point से तो वो साउथ में है 9 किलोमीटर साउथ 10 किलोमीटर साउथ आगे चलते हैं In the following lesson the four letters on the left side is related तो ये 24 दो take 56 days to complete a certain task. When 1/4 of the task was completed, 1/7 of the workers left. बारह चले गए कितने बच गए 72 बच गए How many days in all does it take to complete? How many days in all does it take? One full task was completed. So let's see now 1 4 टोटल काम है इसका 3/4 बचा हुआ है 3/4 बचा है 3/4 काम बचा 3/4 काम बचा 72 बचा तो 12 7 84 12 6 72 3 दूनी 6 तो 49 इंटू से लेकर 1/4 करने में कितने दिन लगेंगे What is India's rank in 2025 SDG? Sustainable Development Index में इंडिया की रैंक 99 लग रही है मेरे को In which year did India officially join the Shanghai Cooperation in a full-fledged member? Shanghai Cooperation 2000 Shanghai
2015 SCO 2015. Find the odd letters from the given odd letters बताने, ठीक है। तो देखो भाई 10 1 x y a टू cars travel from one city to another at speed इतने respectively, ठीक है। कार B takes 1 hour lesser than car A. कार B takes 1 hour lesser speed. Then what is the distance between the two cities? देखो 1872 स्पीड का रेशो है, ए बी की स्पीड का रेशो है। स्पीड का रेशो ये है तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय कितना होगा, 5 और 4 लेगी, तो ये बी ने 1 घंटा जो कम लिया, इसका मतलब है एक यूनिट की वैल्यू 1 घंटा है, तो ये 4 हावर लेती है, ये 5 हावर लेती है। तो डिस्टेंस को ट्रेवल करने में व्हाट इज द डिस्टेंस, 5 घंटे लेती है, तो 5 लेते देख लो 20 किलोमीटर है। पाँच घंटे लेते हैं, 4 घंटे लेती है ना, 4 घंटे लेती है, 50 60 75 Which type of farming is practiced in areas of high population pressure on land? Which type of farming is practiced in areas of high population pressure? Areas of high population pressure on land. Extensive pressure. Area of high population pressure. Which type of farming is practiced in areas of high population pressure on land? Which of the following is an abiotic component of the ecosystem? Abiotic का मतलब होता है जो सा अजैविक है, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगई, ह्यूमस। अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक का मतलब है अजैविक तत्व है, जीवाणु, कवक। अबायोटिक में आई थिंक बैक्टीरिया आएगा शायद। अबायोटिक, बायोटिक, फंगई। Some solid cubes are made of melting a solid cylinder. क्यूब्स हो रहे हैं, क्यूब्स सिलेंडर को मेल्ट कर। द बेस रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, सिलेंडर की बेस रेडियस इतनी है, पाई आर स्क्वायर एच। इधर रेडियस ऑफ द क्यूब जितना होने क्यूब्स विल बी, सारा रखे हुए, ठीक है। Two tables are bought for ₹1 by a person. He sells them later. 2 tables are bought for ₹1 by a person. ठीक है। He sells them later. 1 added log of इतना, another added gain of इतना, ठीक है। incurring a loss of ₹20. आर्टिकल में 5% का लॉस है, क्या 5% का फ़ायदा है, और टोटल में 1% का लॉस है।
बंद कॉस्ट उसका पोस्ट प्राइस कितना है? उसने बेची बराबर है। लॉस कितना है? टोटल लॉस जो हुआ है पहले वो तो 1050 और ये हो सकता है 1050 पे जब 5% के फायदे बेचेगा 1050 में जैसे 1/20 में बेचेगा तो परसेंट के हिसाब से बेचेगा कैसे? Which of these two forms of pop dance are basically love song that originated in Himachal Pradesh? Love song. Lavani, Baul, Koli, Leman, Baul, Leman, Koli, Baul. In certain language, Baul is written as itna. दो आठों से गया 7 8 से गया 4 3 में से 2 गया 1 तो बेसिकली इसने लिखा है इसे वो बी को लिखा गया है बी आर ओ कॉमन है बी आर ओ कॉमन है भाई बी आर ओ कॉमन नहीं आर ओ डब्ल्यू कॉमन है तो 7 2 5 हटा देगा 4 बच गया 7 2 5 4 बच गया 4 आगे चलते हैं हाँ सेल्स बाइसिकल टू इंची का प्रॉफिट ऑफ 30% इंची का सेल्स 2 रुपये का प्रॉफिट रूबी पेड ₹100 की थी वह 30% की प्रॉफिट यानी 13/10 में बेच दी एंड उसे 25% की प्रॉफिट बेच दी यानी कि 5/4 में बेच दी और रूबी को जो मिली है 520 में मिली है 520 में मिली है 13 चौका 8 यानी कि 320 में उसे मिली है 320 में खरीद दी यहाँ पे फॉर इट 320 एन बी स्टार्टेड बिजनेस टुगेदर इन्वेस्टेड फॉर ये में इन्वेस्ट कर रहे हैं ₹36 फॉर 8 months विल बी इन्वेस्टेड सेम कैपिटल फॉर 6 months दो क्या 6 यानी कि 4 और 3 का इन्वेस्टमेंट का रेशो है बी गोट 15/30 का टोटल प्रॉफिट बी को मिलना कितना चाहिए 3/7 ऑफ द टोटल प्रॉफिट 3/7 ऑफ द टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 15/30 3/7 ऑफ टोटल प्रॉफिट 3/35 13/35 टोटल प्रॉफिट का कितना मिला उसे टोटल प्रॉफिट अगर सम कैपिटल अच्छा सम कैपिटल बी को जो प्रॉफिट मिला है 15/31 ऑफ टोटल प्रॉफिट बी गोट 15/31 यानी कि 16 है 16 15 का रेशो है तो प्रॉफिट का रेशो अगर यू है और इन्वेस्टमेंट
टाइम का रेशो कितना है, टाइम का है 2/3। तो समझो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है। सो प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दे तो इन्वेस्टमेंट का रेशो आ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दे, प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो अपना इन्वेस्टमेंट का रेशो आ जाएगा। तो अगर 4 की वैल्यू 36,000 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 4 में 5 में 45,000, इसकी वैल्यू पूछी है 1 - 2/3, 1 - 5 × 3 15, 1 - 15 माइनस का 14, माइनस का 14 है ना, प्लस का इंटू 14 है, 28/3, 1 + 28/3 + 3/2, 6 आ गया। तो 6 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 56 जमा 3 की मल्टीप्लाई कर दी 9, अच्छा 15, 56, 71/6, 71/6 आगे चलते हैं। A whole is longitudinal if the area of the floor is equal to the sum of areas of the 4 walls. The area of the floor is equal to the sum of areas of the 4 walls. अच्छा, सो इसकी हाइट अगर h है वहाँ पे, वॉल्यूम पूछा है ना, सो देखो, सो यहाँ पे रहा होगा 2 × h + 18 + 2 × h × 12, ऐसा करके रहा होगा। तो 2 से 12 तो कॉमन ही आ गया, 14, 12, 12, 36, तो 12 तो कॉमन ही आ गया, तो 12 तो खत्म हो गया। अब 3 और 2 बच गए, यानी 3h and 2h, यानी कि 5h, 5h बराबर 18, यानी कि h बराबर 18/5 × 18 × 12, 2 और 2 अलग 24, तो ये तरीके से ही आ गया 18, 324, 324 में 2.4 की गुना करनी है, 2 × 4 = भाई दोस्त यार लाइब्रेरी से भाई मैं वो बाहर कर लेंगे, बाहर कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। the two interior angle of the same side of the transversal line, the two interior angle on the same side of the transversal intersection of two parallel lines, and there is a 2:7. If the greater angle is y, then the value, ये y की वैल्यू है, ये वाला y है, then इन दोनों का समतुल्य लाइन की वैल्यू तो ये 20 है ना, 20, 20, 20, 140 और ये 40 है। सो उसने पूछा कि राइट एंगल इज वाई, उसने पूछा 3 × यानी 14 पहले 420 - 40 380। सोनम purchased a mobile phone for Ethnic and sold it at a loss of 19%, 27,000 खरीद 19% के लॉस से बेच दिया। With that money he purchased a tablet and sold it at a gain of 7/5. What is her overall gain in purchase? पाँच है, 5 में 25 तो यहाँ लगे 5 26, 54 गुना 81, 4 8 32 5 7 का चल के 3 लग गया, 3 19 6 का चल के 2 लग गया,
1000 70,000 की कोई चीज़ खरीदी थी 19% के लॉस पर बेच दी यानी कि 81% पर बेच दी 27,000 गुना 81% गुना 20% 20% यानी कि 6,000 का बेच दी तो ये बेच गया 5 5 से 25 32 6 और 16 756 triangle ABC D and E are the point on in triangle ABC D and E are the points on AB and BC respectively such that DE parallel to AC AD और AB का रेशो दिया हुआ है AD and AB का रेशो दिया है 3:5 area of ABD BDE और area of BEC दे भाई चौथा होता है उनतालीस अपने भी मैंने लिखना है तो ये तो तरीका पूरा अगर देखा जाए तो 11 + 6 2 = 2 13 26 13 आ गया 13 + 4 है 13 + 4 है तो 4 गुणा 169 169 प्लस 16 170 प्लस 15 150 से 74 38 740 सेम टू नंबर से जितना सेम टू नंबर से जितना देन द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस स्क्वायर रूट प्रोडक्ट कितना होगा इतना स्क्वायर रूट 50 का तो 9 6 तो 3 6 18 आगे चलते हैं मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम ठीक है द इनकम इज इंक्रीज हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 100,000 थी उसकी 800 खर्च कर लेता था 200 सेव कर देता हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 20% एंड एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाई 10% हिज सेविंग्स आर इंक्रीज बाई सेविंग कितनी होगी इसकी 120 120 और 200 320 120 बढ़ गई इंक्रीज बाई What is the least number value of p so that is divisible by 6 6 से डिविजिबल होने के लिए इस नंबर को 2 और 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा 2 से डिविजिबल है 3 से डिविजिबल होने के लिए 2 3 6 4 5 11 11 और 6 11 और 6 17 17 और 1 आ सकता है 4 आ सकता है 3 7 आ सकता है 10 आ सकता है 10 तो आगे चला तो 7 आ सकता है लिस्ट में तो कुछ ही है ध्यान से क्वेश्चन में बोल रहा हूँ द एवरेज मार्क्स ऑफ 21 पेपर इज 50 ठीक है द एवरेज मार्क्स ऑफ द फर्स्ट 11 है जितना क्लास लेंगे फाइनल मार्क्स तो देख भाई इसमें ऐसा करना पड़ेगा 11 पेपर के एवरेज मार्क्स भी अगर 20 ही मान लूँ मैं 11 पेपर के अगर एवरेज मार्क्स भी है देख पूरे के 50 है 21 के 50 है ना तो पहले 11 के अगर उसके 50 है ठीक है अब देख 50 में घटेगा क्या और उसके 50 हो तो बेसिकली इसमें से माइनस कितने होंगे 11 गुना 2 प्लस कितने होंगे 11 गुना 5 से फालतू इतने तो घटेंगे
55 में से 22,000 33 घटाने 17 44 of the student in a class are females 44 the student फीमेल है एंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट जितना यानी कि 56% की वैल्यू अगर 42 है यानी कि 4 यानी कि 7 8 56 7 संग 42 8% की वैल्यू इतना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 4% की वैल्यू 2 से डिवाइड कर लेंगे और 3 आ गई 25 से 75 The bronze dancing girl was discovered from which of the following in this value? Bronze dancing girl में जो डाला तो मिली मैंने सोचा स्ट्रीम स्पीड एंड डिस्टेंस स्पीड लिखना स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जितना 4 प्लस 7 बटे 11 बटे 2 डाउन स्ट्रीम स्ट्रीम स्पीड है ना यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू है 7 और x माइनस वाई की वैल्यू है 3 4 स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दी हुई है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दी हुई है भाई देखिए स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी है स्पीड ऑफ द बोट कितनी है देखिए बोट की स्पीड अगर तेरी 75 है 75 कितनी हो जाएगी 75 और ये 102 होगी यानी तो माइनस करेगा 25 माइनस करेगा 50 और 2 और माइनस करेगा तो कितनी हो जाएगी 48 ऐसे देख लो 24 12 2 से 4 से काट गया 2 से काटेगा 24 बार 2 से काटेगा कितना आ जाएगा 51 तो 3 8 24 3 से कट के 17 बार 17 इस 2 8 आ गई 75 अगर तुमने लिया है तो लगता है 17 इस 2 8 और चढ़ गया हमें तो लगता है 99 ऐसे 27 से उठेगा 72 आ गई 27 से उठेगा तो कितनी आ जाएगी 126 तो तेरी 18 चौका मारता 18 से 126 The difference between the compound interest and the simple interest on certain sum at 12% per annum for 2 years है जितना compound interest simple interest 2 years के लिए compound interest and simple interest कितना होता है और इसको भाई 100 ही होता है यानी 12 इंटू 12 बाई 100 find the principal इसको और इसको फंडामेंटल बताना है इसके वैल्यू बताना है 9 6 गुना 36 बाई 4 9 9 Who was the founder of Brahmo Samaj in 1828 at Kolkata? Brahmo Samaj Raja Ram Mohan Rai. An amount of 6,000 is shared by PQ to which now the square 12 12 5 की मल्टीप्लाई करनी है 12 पंजे 500 की मल्टीप्लाई करनी है 500 का 2 के मल्टीप्लाई का 4 ऐड करेंगे ठीक है आगे चलते हैं इन्होंने अल्फांसो दी कैप्चर्ड व्हिच पुलिस फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बिजापुर
and made it the capital of Portuguese Eastern Empire. Portuguese Eastern Empire, Calicut, Cochin, Surat, Eastern Empire, Eastern Empire, Calicut, Cochin. ABC 1156 different floors of the same building. Different floors of the same building. The lowermost floor is number only one person lives below E. Window 3 1 2 3 4 5 6 only one person lives below E. He does not live on the topmost floor. He does not live on the topmost floor. Only 3 people live between A and C. C lives below A. C lives below. Only 3 people live between. तो कहाँ बैठ सकता है तार? आगे देखते हैं. on the topmost floor. 1 2 3 4 5 तो ये है. So A यहाँ पे आएगा. 1 2 3 इसके बीच में आ गया. तो यहाँ C आ गया. आगे चलते हैं. C lives below. D lives immediately above B. D lives immediately above B. बस. Who lives immediately above A? A के above कौन है? F आ गया. A के above F आ गया. आगे चलते हैं. P के बारे में लिves on the same different floors and the lowermost floor and the floor above is number 2. 1 2 3 4 5 6 7. U lives on the top floor. U lives on the top floor. Only 2% lives between T and Q. Only 2% lives between T and Q. Q is on the floor number 3. Q is on the only 2% live between T and Q. इसका मतलब T ऊपर है. T यहाँ है. Q live on the floor. V lives on the floor immediately above P's floor. V और P तो यहीं आ सकते हैं. P S lives on the floor immediately above R. Q lives on the floor immediately below R. Q lives on the floor immediately below R's floor. S lives on the floor immediately above R's floor. Second 75 floors of the lowest floor is number 1, the above floor is number 2, and so U lives on the top floor. ठीक है. U top पे आ गया. Only 2% live between T and Q. Only 2% live between Q is on the floor number 3. Floor number 3 पे and only 2% live between T and Q. T और Q के बीच में अगर 2 लोग हैं तो 4 5 2 लोग हैं इसका मतलब तो ऊपर ही होंगे. ठीक है. T ज़्यादा नंबर पे है. V lives on the floor immediately above P's floor. V lives on the floor immediately above P's floor. V lives on the floor. अच्छा ये क्लियर लिखा है. गलती बढ़ गया मैंने. ठीक है आगे चलते हैं. S lives on the floor immediately above R's floor. S lives on the floor. V lives on the floor immediately above P's floor. ठीक है. Q lives on the floor immediately above R's floor. Q lives on the floor immediately below R's floor. तो ठीक है. R यहाँ पे आएगा. S यहाँ पे आएगा. P V यहाँ पे V. Who lives on the floor number 6? तो फिर भी सही था. T पे आता है. आगे चलते हैं. A boat goes 8 kilometer upstream and 8 kilometer downstream in 3 hours. Okay, speed of the current is इतना 8 kilometer upstream यानी कि x minus 2 plus 8 upon x plus 2 equals to 3. यही तो आ गई. सो स्ट्रीम जो होती है वो x प्लस डाउन स्ट्रीम ये होती है
डिवाइड टू कर लो फिर मैं इसको, तो यहाँ से देखेंगे भाई कि अपना जो है स्पीड ऑफ द बोट इन द स्पीड वाटर, बोट की स्पीड अगर मैं 4 रख दूँ तो 4 आ जाएगी यहाँ पे, अगर मैं 3 रख दूँ, अगर मैं 8 रख दूँ, 8 तो 6 हो गई ना, देखिए 1 रख दूँ, 6 रखता हूँ स्पीड ऑफ बोट, अगर मैं 6 रख दूँ, 6 तो कितना हो गया, 8 तो 1 तो बच गया, ठीक है 6 रख सकते हैं, ठीक है। 91 प्लस का मतलब भाग है, 91 भाग 13 माइनस का मतलब है गुणा 8, और गुणा का मतलब है माइनस 37, का मतलब है प्लस 44 56 100 माइनस 37 53 63। King Kharavela, the ancient Indian king whose biography is found on the famous Hathigumpa inscription. King Kharavela, the ancient Indian whose biography is found on the famous Hathigumpa inscription, ruled from King Kharavela. King Kharavela, Hathigumpa caves का है, साउथ में गया Hathigumpa caves, Hathigumpa caves, गोड Hathigumpa, Kontala, आंध्र, कलिंग, Hathigumpa, God, Kuntala भी हो सकता है, Kuntala। One pipe can fill a tank for, one pipe can fill a tank 4 times as fast as another pipe, ठीक है, तो 4:1 आ गया। Together the 2 pipes can fill a tank in 48 minutes, यानी 5 गुना 48 पूरा टाइम है, slower pipe alone will be able to fill the tank in 240 minutes। Shortcut key to save a document in MS Word। What is the primary function of the control unit in a CPU? Perform arithmetic calculation, managing external device connection, directing the flow of instruction and data, managing external device connection। एक 2 3 प्लस करेंगे, 8 9 10 11 11 11 11 11 11 4 5 6। Which lens used in simple microscope is? The lens used in simple microscope। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब होता है जब इनमें से देखते हैं, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि वो हमें बड़ा करके दिखाता है, और बड़ा करके कौन सा लेंस दिखाएगा, बड़ा करके हमें दिखाएगा, कौन सा लेंस बड़ा करके दिखाता है, जो डाइवर्स करता हो, यानी कि जो ऐसा मान लो कि आंखों से रेज आई, ये डाइवर्स करता हो, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस की ये वाली कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन, इसमें से हम फोकस किसके बीच में रखते हैं तो वो बड़ी इमेज बना देता है ना, फोकस के और इसके बीच में, लेंस के फोकस के और इसमें, तो उसकी इमेज, इसकी वर्चुअल इमेज बनाते हैं, सीधी नहीं, सिलेंड्रिकल होना चाहिए ना, कॉनकेव ही होगा। Inner citizenship can be acquired by which of the following methods? Birth within the territory of India, marriage to an Indian citizen, all of marriage to an Indian citizen, naturalization. Which of the following was used as the main electronic component in the 4th generation computers?
So the following was used as an electronic component in the fourth generation electronic component. फोर्थ वाले में क्या था हमारा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे फोर्थ वाले में ना, ये ट्रांजिस्टर्स थे। फिफ्थ जन चल रहे हैं सर्किट्स, तो ट्रांजिस्टर्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स सर्किट्स। The Make in India initiative was formally launched. The Make in India initiative was formally launched by Prime Minister Shri Narendra Modi at Vigyan Bhavan, New Delhi on Make in India. Make in India initiative. Make in India. Make in India. 24 July. Who give the panchayat the right to tax? The right to tax state legislature. From a point Q, the length of tangent to a circle is 40 centimeter and the distance of Q from the center is 41 और ये कितनी हो जाएगी हमारी 80, एक कम एक 4 4 8 16 16 से 80 9 आ जाएगी। फिर the radius of the circle is 9। Urdu, Bengali and Assamese belong to which of the following language families in India? Urdu, Bengali, Assamese। ये तिब्बतन तो नहीं है, मुंडा भी नहीं, द्रविड़न भी नहीं। इंडो आर्यंस कह सकते हैं क्या? तिब्बत की तो नहीं है, देखो बंगाली, तिब्बत की तो नहीं, द्रविड़न कह लो, द्रविड़ की भी नहीं होगी है। इंडो आर्यंस कह लो, बाहर से आई थी ना। मुंडा फिर तो फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट में हमारा आ जाएगा, एक सेकेंड, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट क्या है? सेकेंडरी ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। Suez Canal is an artificial waterway that connects each of the following to Suez Canal. Suez Caspian Sea को मेडिटेरेनियन को ब्लैक सी से कनेक्ट कर दिया गया। कैप्सियन सी को कनेक्ट कर दिया। अभी सुएज कैनाल कहाँ पे है? सुएज कैनाल, सुएज मेडिटेरेनियन तो आएगा, ठीक है। आगे देख लें, ब्लैक सी आता होगा बस। मेडिटेरेनियन को रेड सी से भी कर सकती है। सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है इसकी, तो सिंप्लीफाइड वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? कोस स्क्वायर टी कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए।
साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 1 इंटू 1 तो 1 है। कोसेक स्क्वायर ए 1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, यानी कि 1 साइन है, कोस से बाहर निकल गया, यानी कि 1 साइन है कोस से कितना होता है, tan ए कोट ए के बराबर ही तो होता है। 1 साइन ए कोस ए बराबर होता है tan ए कोट ए भी तो होता है, क्योंकि अगर हम इसमें होल डिग्री वाले रखेंगे तो 1/2 आ गया, तो tan ए प्लस कोट ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। नाउ इज रिलेटेड टू पी। पी से कैसे है, देखो पी जो है पी ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा सन ऑफ पी है, पता नहीं अभी, ठीक है सन है, ये मेरा बेटा है, और मेरे बेटे की मेरे बेटे की बहन मेरी बेटी है, मेरी बेटी का बाप, मेरी बेटी का बाप, ठीक है समझ गया। ये मैं हूँ, मेरी वाइफ होगी, ठीक है चलते हैं। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, मेरी वाइफ है। अब ये जो है ये परसेंटेज का निशान डॉटर है, ये हमारी बेटी है, इसकी क्या है, बेटी है, डॉटर है, which article was inserted in the constitution by 103rd constitution amendment to provide EWS के लिए मैंने किया था 16 का 6 15 का 6 16 का 6। Mr. Shivraj Singh Chauhan announced the introduction of New Speed Act to replace the outdated legislation. New Speed Act to replace which outdated legislation? To replace which outdated legislation? Speed Act. शिवराज सिंह चौहान ने करा है ना, अभी करा होगा। J.C. Thomson was able to determine the following using the cathode ray experiment. जैसे थॉमसन cathode ray experiment, the charge to mass ratio. The charge to mass ratio of a proton, the majority of an atom's mass is in its tiny but maximum nucleus. The majority of an atom's mass is in its tiny. The majority of an atom's mass is in its tiny but maximum nucleus. Thomson was able to determine the following using the cathode ray tube experiment. Cathode ray tube, the charge of an electron. In which of the following state prime minister will launch the धरती ग्राम उत्कर्ष अभियान? धरती आबा। The following is an example of the system software का example है, system software, operating software, ये system software।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये तो, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी एप्लीकेशन है, सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। The concept of sustainable development was emphasized internationally by World Trade Organization Development Program, Environment and International Development Program, UN National Conference on Environment and Development Program, UNDP. The basis of operation alert is especially launched along which major geographical features border in Rajasthan for increased security vigilance. Which feature eastern border will be operation alert, west international alert. The 12th schedule of the Constitution contains how many functional items for municipality? How many functional item 12 schedule है municipality के लिए 18 है ना, 18 आगे चलते हैं. What is the major issue dealt with in Baba Padamji's novel Yamuna Pariyatan? What is the major issue dealt with in Baba Padamji's novel? Difficulties in Yamuna Pariyatan. Yamuna Pariyatan. Yamuna Pariyatan. Yamuna Pariyatan. अच्छा. Yamuna Pariyatan. Yamuna Baba Padamji's blind faith. Baba Padamji. Directive principle of state policy aims to provide which type of guidance for the state, social and economic. आगे चलते हैं. Mango sugar is distributed by the following state. Kerala and Karnataka. Right example of the plant group algae. Pteridophyte. Anaria. 1, 2, 3, 4 सारे तरह के हैं. For the member of parliament in India who determines the salaries and allowances from time to time. Parliament by law. This is available the same way as the numbers in the following set. 1957. 19
ठीक है 4 माइनस गुना ऐसे 53 में कितने गुना करिए 4 की करिए 212 प्लस 3 करें -4 प्लस 3 4 की गुना करके 4 की गुना करके 4 की गुना करके -4 करें 4 की गुना करके 4 की गुना करके 35 चौके 212 प्लस 3 करें ना प्लस 3 ऐसे प्लस 3 करें तो 35 चौका 35 चौका बता लें प्लस 3 which of the following devices can perform which of the following devices can perform both input and output functions कौन सी डिवाइस कर सकती है both input and output function communication device what is the value of 2 explaining the mean of the following distribution is 54 mean of the following distribution is जमा 50 x जमा 630 जमा 90 वही इक्वल्स टू 54 है 54 डिवाइडेड बाई 50 40 और 63 कितना है 103 इक्वल्स टू 5x 3 प्लस 5x प्लस 9y 5x प्लस 9y इक्वल्स टू 220 ठीक है 117 5x प्लस 9y इक्वल्स टू 217 इसमें दिया हुआ है कि 18 और 9 18 और 9 27 प्लस x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 23 है 5 के मल्टीप्लाई कर लें 100 115 घटा लें 4 वाई इक्वल्स टू 2 वाई इक्वल्स टू 1/2 वाई इक्वल्स टू 1/2 तो 117 माइनस 9/2 इक्वल्स टू 5y 234 में से 10 गए 224 225/2 5 से घट के 5 चौक 20 2 यहाँ लगे 5 5 25 45/2 आ गई एक तो और एक आ गई 1/2 सो 2 गुना 45/2 जमा 3 गुना 1/2 अच्छा 5 से मल्टीप्लाई करें ना 100 115 आ गई ठीक है 23 आया था ना 23 18 9 27 23 प्लस वाई तो 23 ही आएगा
40 45 45 45 और 45 और 9 54 54 और 63 110 और 7 110 और 117 117 जमा 5x जमा 40 40 40 40 और 63 103 103 प्लस x प्लस 9 NEC के तो NEK तो इसमें आ ही गया NEK सी का पूछा है सी का देख ला 193 तो इसमें है 193 तो 8 आ गए आगे चलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ इतना है ए भी दिया हुआ इतना है 6 है ये भी 6 है 3 का 4 64 जमा 14 64 जमा 24 7 7 7 49 छः है ना 5 1 6 कैसा आएगा ये देख लो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 88 जमा 1200 तो ए प्लस बी 10 आ गई ए प्लस बी 10 आ गई ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए तो 10 88 माइनस 6 82 820 एवरेज ऑफ द नंबर्स इज 7 8 5 13 13 और 3 13 और 3 16 16 नेक्स्ट 17 प्लस 2 के इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 2 के इक्वल्स टू 18 के इक्वल्स टू 9 each of you have exam on different days of the week starting from Monday and ending with Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday ending with Sunday of the same week or has exam on Thursday no one has an exam before B you has an exam immediately before R you have exam immediately जैसे यू का एग्ज़ाम यहाँ पर ठीक है बट आफ्टर एस ठीक है क्यू हैज़ एन एग्ज़ाम बिफोर टी क्यू हैज़ एन एग्ज़ाम बिफोर टी बट आफ्टर पी हाउ मेनी पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन एस एंड टी 1 2 3 4 लोग का है ये पूछा हाउ इज टी रिलेटेड टू डी टी रिलेटेड टू डी देखो जो टी है टी बेसिकली है क्या यू प्लस टी है ए इज़ द हस्बैंड ऑफ तो टी हस्बैंड है बी जैसे आदमी है पहले तो आदमी हो गया अब ये आदमी है आदमी के पापा है आर इसके आर मेरे पापा है आर मेरे पापा है अब ये मेरे पापा की मदर है ये मेरी दादी होगी ये मेरी दादी होगी एक सेकंड ये मैं हूँ ये मैं हूँ ये मेरे पापा है ये मेरे पापा है ये मेरे पापा की मदर है मेरे पापा की मदर है मेरे पापा की मदर के हस्बैंड है मेरे पापा की मदर के हस्बैंड है हाँ तो मेरे दादा तो लगे मेरे हाउ इज टी रिलेटेड टू अच्छा टी पूछा रिलेटेड टू सन इन योर पैटर्नल ग्रैंडसन ठीक है प्लस है ना ठीक है पैटर्नल ग्रैंडसन
There are 5 books. There are 5 books. There are 5 books: Math, Science, History, and Engineering. Which books has the second highest number of pages? Second highest number of pages किसमें है? Science has the least number of pages. History has a greater number of pages than all the subject except English. इंग्लिश में सबसे ज़्यादा है इसका मतलब, और हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट है, तो स्टेटमेंट 2 इज अलोन टू आंसर। ठीक है। A sum of money becomes 10,000 in 5 years and 10,000 2 साल में 2,000 बढ़ गई, 1 साल में 1,000 बढ़ गई, 1 साल में 1,000 बढ़ गई, यानी 5 साल में 5,000 बढ़ गया होगा, यानी सम तो 5,000 रहा होगा, 5,000 सम रहा होगा, हर साल उस पर 1,000 रुपये बढ़ रहा है, यानी कि ये देख लो भाई तो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब 66 में गुणा कर दी 3 की, डी का मतलब डिवाइड कर दिया 11 से, बी का मतलब प्लस कर दिया 43, सी का मतलब माइनस कर दिया 48, डी का मतलब भाग कर दिया 12 से, तो 4 आ गया, 4 आ गया। अब 3 और डिवीज़न बाई 11 है ना, ठीक है, तो 3/11 है ना, 6 18 प्लस 43 माइनस 4 45 जोड़ना है, यानी 40 जोड़ना है 17 में, 40 जोड़ना 17 में 57 हो जाएगा। आगे चलते हैं। 7 सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, I sits fourth to the right of J. I sits fourth to the right of J. Only 2 people sit between B and C. Only 2 people sit between B and C. Only 2 people sit between B and C when counted from left of B. ठीक है। D sits third to the left of K. D sits third to the immediate neighbor of K and C. L is an immediate neighbor of K and C. अच्छा, L is an immediate neighbor of K and C, ऐसे करता हूँ। और आगे पूछा क्या इन्होंने, D sits third to the left of K। 1 2 3, तो ठीक है, D sits third to the left of K हो गया। एंड एक बच गया वाला जब हमने बताया between I and L. How many people between I and L when counted from the left of L? 1 2 3 4 people हो जाएंगे ना, 4 people हो जाएंगे, 4। In the series find a letter which is fifth to the left from the 13th letter from your right, 13 letter from your right। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इसके भी लेफ्ट में कितना ढूंढना है, इसके भी लेफ्ट में फिफ्थ देखना, फिफ्थ 1 2 3 4 5। अच्छा आगे चलते हैं। Tables are bought by a person. Tables are bought by a person to एक की वैल्यू x है, एक की 2000 माइनस x है, ठीक है। 1 एट अ लॉस, इसे जब बेचता है उससे बेचता है लॉस पे अपने के। अच्छा, एक को बेचता है वो 5% के लॉस पे, यानी कि इसका 5%, इसका 105% गेन पे बेचता है, 5% गेन में बेचता है, इसे 5% के लॉस पे बेचता है। इन दोनों का भी डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू 20।
भेजता है, यानी कि इन दोनों का जो जोड़ है वो 1980 है, ऐसे करके मान लें। ठीक है, तो भाई यहाँ से देख लें, 5 से जब तो घटेगा, 5 से बांट लें, 21 5 से घटेगा, 5 ये 15 15 4 यहाँ लगे, 5 में 45 3 यहाँ लगे, 5 में 30, 5 से 15 4 यहाँ लगे, 5 में 45 5 में 30। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है, एक सौ तो ले लें, 21 माइनस 19 गुना 38 0 0 0, और ये तो गलत सही, माइनस का 19x 2x ही कर दीजिए डायरेक्ट, 2x बराबर 396 0 0। ठीक है, तो 1600 आ गया 2x की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू 800 आ गई, x की वैल्यू 800 आ गई। इसका मतलब है कि एक का 800 है और एक की 1200 है, 800 1200 है। आगे चलते हैं, ये पूछा है व्हाट इज द वैल्यू बिटवीन द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। और इनका मीन 54 है, मीन 54 है, का मतलब है 0 से 20 होगी तो इसका मतलब 10 आ गई, 60 है, 30 आ गई, 100 है, 50 आ गई, 70 आ गई, 90 आ गई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 11 है, 7 है, 11 है, x है, 9 है, y है, टोटल 50 है। इसका मतलब होगा 7 11 18 18 और 9 18 28 27 27 27, तो x प्लस वाई की वैल्यू 23 है, 23 है, तो 70 और 330 50x 630 और 90y 90y का जो जोड़ आएगा उसे डिवाइड करने पर 50 से। ठीक है, जोड़ कितना आएगा देख लो भाई, जोड़ आएगा 700 400 400 और 630 कितना हो गया 1030 प्लस 50 वाई प्लस 90 वाई डिवाइड करेंगे 50 से बराबर 54 गुना 50 54 गुना 50। ठीक है, तो एक जीरो हटा दो, तो 5y 5x प्लस 9y इक्वल्स टू 270 आ गया ना, 270 माइनस 103। अच्छा, तो ये आ गया अपना कितना 163 167 103 ही तो है, 167 आ गया, 167 आ गया। 5 की मल्टीप्लाई कर ले, 5x प्लस 5y प्लस टू 115 माइनस कर लो 4y इक्वल्स टू 50 52, वाई की वैल्यू 13 आ गई, वाई की वैल्यू 13 आ गई, तो एक्स की वैल्यू 10 आ गई, 10 आ गई, तो एक्स की वैल्यू 10 आ गई ना, तो 20 और 39 20 और 39 59 ये तो हो गया। आगे देखते हैं ये मैंने करा था कैसे कि भाई जी के अल्फ़ाबेटिकल रेंज है, अल्फ़ाबेटिकल रेंज है। सो यहाँ पे मैंने करा था कि एम का पॉजिटिव तो करा था 17 में क्या करा था 17 में करा था 2 को निकल थे, अरे यहाँ क्या करा था मैंने
everyone, so we are calling off the session. Would join you soon, but I'm not able to see the comments. Let me quickly check the comments on other phone. This is having some issue. Everyone, I'm calling off the session.